Welcome to Virtual Learning Network. Session number 18, Foundation Course in Science and Technology, Resource Utilization, Planning and Management. The topics that will be covered in this session are use of natural resources, recycling of used resources and waste, resource planning and management, conservation of mineral resources. So, we are going to cover all these topics in this session, which are in view of that study of that science and technology quite important. First, the use of natural resources. Various resources are being currently used in our country. That is land, water, forest cover, minerals. So, अगर हम बात करें इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो ये सभी हमारे देश में यूज़ होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ लैंड. इसको हम एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए एवं अन्य प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. वाटर अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा नेचुरल रिसोर्स है, जिससे हम बिजली के प्रोडक्शन में और अन्य जैसे इरिगेशन इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं. देन आफ्टर आवर फॉरेस्ट कवर, दे आर यूज्ड फॉर फर्नीचर, minerals as well that we use for different purposes. First, land. Land is the most precious resource. Nearly 44% of land in India is used for agricultural purposes, and out of which 11 to 14% is covered with forests that include good as well as degraded forests, and 4% of the land is used as pastures and grazing fields, and the remaining 8% is used for various other purposes such as housing, that is agroforestry, and establishment of industries, development of roads and reservoirs, etc. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंड यानी कि भूमि जिस पर हम सभी रह रहे हैं, ये सबसे अमूल्य रिसोर्स है, सबसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें कि 44% इंडिया का हिस्सा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए अर्थात कृषि के लिए इस्तेमाल होता है, एंड आउट ऑफ विच 11 to 14% दैट इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट का पार्ट है, ये एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि किसी भी कंट्री, किसी भी देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन है. एंड मोर ओवर 4% ऑफ दैट एंटायर लैंड दैट इज यूज्ड एज पास्चर्स. 4% हम ग्रेजिंग फील्ड्स या कह लें कि इसे हम चारागाह की तरह इस्तेमाल करते हैं, एंड द रिमेनिंग 8% दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस. इसमें हाउसिंग है, एग्रोफॉरेस्ट्री है और अन्य कई उद्योग धंधे जो हम लगाते हैं. इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क्स जो कि रोड्स, रिजर्वायर्स, इन सभी के लिए हम भूमि का, लैंड का इस्तेमाल करते हैं. Now,
the second part of that land, nearly 113 of the barren land has lost its productivity due to alkalinity or salinity of the soil and waterlogging, etc. Soil erosion that causes a great harm to productivity of our land. Migration of people to towns increases their population and expands their size. Thus, the necessitating conversion of agricultural land to housing, office and factory buildings, roads and bridges, etc. इसमें सॉइल इरोजन जो कि भूमि को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके अलावा ये इसकी उत्पादकता, इसकी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देता है। सॉइल इरोजन का मतलब है भूमि का कटाव, और इसकी वजह से लोग एक टाउन से दूसरे टाउन में माइग्रेट होते हैं और जिससे पॉपुलेशन का साइज एक टाउन से दूसरे टाउन में वेरी कर जाता है। Now, water that is used for irrigation of fields or for drinking purpose, and that is obtained from the rivers and streams and from wells which give access to the underground water reserves. In spite of the abundance of the water flowing down the rivers or stored underground, most of the villages even today do not have adequate supply of good quality drinking water. अब भी हमारे सभी विलेजेस में, गांव में अच्छे पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इसके अलावा हम इसे सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंचाई योग्य पानी हम रिवर्स से, छोटे छोटे झरनों से, कुओं से ला पाते हैं। इसके अलावा भूमिगत जल एज अ रिजर्व है जो हम पीने के लिए या अन्य कई तरह के कामों में इस्तेमाल में लाते हैं। Now, if we talk about that forest cover, an analysis of satellite imageries and air photos indicates that in 1982, about 11% of the land area in India was thick forests, and the remaining 3% degraded or thin forests. And during the last 30 years, approximately 4.3 million hectares of forests were converted into agricultural fields or lost in construction of dams and roads. And this is quite a good fraction of the 75 million hectares of the total forest area. अगर हम बात करें उपग्रह से लिए गए चित्रों की, पिक्चर्स की, तो ये इंडिकेट करता है कि 1982 में लगभग 11% भूमि का क्षेत्रफल, एरिया, जंगलों से घिरा हुआ था, एंड द रिमेनिंग 3% इट हैड डिग्रेडेड और थिन फॉरेस्ट। यहाँ पर 3% का जो एरिया था, यहाँ बहुत ही कम मात्रा में जंगल थे, फॉरेस्ट थे। और पिछले 30 सालों में अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में तब्दील कर दिया गया, या यहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए, रोड बना दिए गए। So we can say it is quite a good fraction of 75 million hectares of the total forest area. Minerals like coal, iron,
copper, steel, etc. are used in all kinds of industries and in everyday life. The rate of consumption of minerals is increasing every year. Although the per capita consumption of some minerals like limestone and iron ore is higher than some other minerals like bauxite, clay, gypsum, silica, sulfur और कोल एक्सेट्रा। तो बात करें अगर हम मिनरल्स की, तो कोयला यानी आयरन लोहा, कॉपर यानी तांबा और स्टील, ये सभी मुख्य मिनरल्स हैं और इन्हें हम अलग अलग तरह से इंडस्ट्रीज में, अपने उद्योगों में और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और हर साल इसका कंजम्पशन, इसका उपभोग बढ़ता चला जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें पर कैपिटा कंजम्पशन की इन सभी मिनरल्स की, तो हम पाते हैं कि स्टोन्स, आयरन ओर और जिप्सम, सिलिका, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एन्यूलाइट, इन सभी का उपभोग भी हर वर्ष बढ़ता चला जा रहा है। Recycling of used resources and waste. Some of the materials once used need not go waste. These can be reused. And the process through which the waste resources are again made usable is known as recycling. Here are some examples given, like scraps and used metals, wastewater, सॉलिड वेस्ट। तो ये जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, इसे अपनाकर हम पुनः उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे दोबारा से यूज में ला सकते हैं। स्क्रैप्स एंड यूज्ड मेटल्स। स्क्रैप मेटल इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। ओल्ड use metal of discarded vehicles, machines, aircrafts, ships, buildings, etc. can be melted and recycled for useful purposes. Used aluminium utensils, for example, can be collected, melted and shaped into new utensils. अब ये जो स्क्रैप्स हैं और जो इस्तेमाल किए गए मेटल्स हैं, इसको हम दोबारा से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्कार्डेड व्हीकल्स की, मशीन्स की, एयरक्राफ्ट्स की, शिप्स की और अन्य बिल्डिंग्स की, तो इसमें हम इसको दोबारा से मेल्ट करके और इन्हें एक अलग शेप देकर इसे दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। Waste water. Domestic and municipal waste water is rich in organic nutrients. If water is made free from disease carrying germs and poisonous elements, it can be used for irrigation of farms, gardens and other vegetation purposes. And for the removal of germs and toxic elements, the waste water or sewage is treated in a tank or in ponds for several days. The heavy particles settle down to the bottom of themselves, and while the finer particles are made to settle down by adding alum and caustic soda. तो इसके बहुत से इस्तेमाल हम देख पा रहे हैं, लाइक इट कैन बी यूज्ड फॉर दैट वेजिटेशन इन गार्डन्स एंड इरिगेशन एज वेल, वी कैन यूज इट फॉर। और अगर हम इसमें से जर्म्स और टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकाल दें तो इसे हम पीने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं।
then wastewater again. The clear liquid is then allowed to pass through filters or sand or earth, and finally air is blown through it. This treatment not only removes carbon dioxide and oxygen sulfide, which is generally dissolved in wastewater, but also adds oxygen to the filtered water, thus helping in purification. And the treatment of water with appropriate doses of chlorine, known as chlorination. Now we study about that solid waste. Solid waste in some cases can be a resource. Fermentation of wastes such as cattle dung, human etc., garbage and aquatic weeds like algae and water hyacinth produces biogas which can be used for a variety of purposes. Fermentation takes place at temperatures between 28 degrees and 40 degrees Celsius, and gases produced are predominantly methane and carbon dioxide with a small quantity of hydrogen sulfide and nitrogen also. So these are solid waste and that can be used. Land use, planning and management. People see land everywhere and get an impression that plenty of it is available. Land is an inexhaustible resource and is very sensitive to changes in climate and physical processes in nature like rain, sunshine, vegetation, erosion, landslide, etc. And land should be used according to its suitability and capability. Land use planning and management. Food for an increasing population requires more land for cultivation. The encroachment of fertile agricultural lands for non-agricultural purposes like construction of roads and buildings should be reduced to the minimum. अगर हम बात करें लैंड के इस्तेमाल की, भूमि के इस्तेमाल की और उसके मैनेजमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और उसी तरह की लैंड कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी हो जाती है. तो ऐसे में रोड का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स का बनना और इंडस्ट्रीज का ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित होना, बनना, ये प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट को हैम्पर कर देता है. इससे लैंड की स्कार्सिटी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है, जिसका कि हम अच्छे से या कह लें कि हम उसका उचित लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं. Land use, planning and management. Number 3. The essential components of land management are drawing up of a land capability map indicating that soil productivity and ability to support various human activities in rural and urban areas, and this kind of map is prepared with the help of aerial photo and satellite imageries. And a detailed study of various aspects of land such as type of soil, physical features of the earth's crust, water resource input, etc. A program of land use can be worked out on the basis of such information. Land use, planning and management. Number 4. The essential component of land management. Changes resulting from land use have to be monitored, and this can be done by remote sensing. Investigation and estimation of anticipated
intensivity of natural hazards likely to threaten a particular area or region. A comprehensive study of program and plan of land management with a view to preserve the land by reducing or checking the intensity of erosion or soil sickness. How can we manage the soil? That is soil management. The management of soil is twofold: to minimize or check the soil erosion, and second one is restoring productivity of soil. Then control of soil erosion. You can see in the picture that how we can control the soil erosion. Again, this picture shows the same, that how you can control the soil erosion. Treatment of soil sickness. The rotation of crops and vegetables such as peas and beans help to remove the deficiency of nutrients. Plants such as peas add nitrogen to the soil and thus increase its binding property as well as protectivity also. The roots and offshoots of the crops and their remains are left in the field for a certain period of time to protect the soil from erosion. And then treatment of soil sickness. Excessive irrigation causes complete saturation or waterlogging of soil, and that constantly because of that the productivity is lost, and that is partially or else completely. या तो प्रोडक्टिविटी इससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है या आंशिक रूप से. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होना भी कभी कभी लाभप्रद होने के बजाय हानिकारक सिद्ध होता है. And this kind of soil sickness can be controlled by sealing off all points of leakage from canals, reservoirs, tanks and ponds, and use of only the required amount of water. Then management of forest resources. If deforestation has to be stopped, some necessary steps have to be taken. First, the adoption of a scientific method of harvesting forest stocks, developing a mechanism of monitoring forest growth rate and depletion, establishing an effective system of fighting forest fires, and strictly enforcing laws to deal with the unauthorized cuttings of trees. Then management of forest resources. First, by tree plantation on a mass scale, and the productivity of tree plantation is found to be greater than that of natural forests. Social forestry. A farmer can partly meet his needs of wood from the fast growing trees planted within the limits of his village, along with the footpaths, roads, etc. And the aim of the social forestry is to meet the needs of fuel, fodder, fruit, timber and other requirements. And how we manage the water resources. Management of water resources means a program to provide an adequate supply of food and the quality of water for various uses without endangering the life of the source or the reserve of water. And water management includes recharging reserves or groundwater and diverting supply from an area of surplus to the region of scarcity. And if we talk about excess flow, that should be normal only. There should not be any excess flow. And again, two means are given for the management of resources. First one is desalination of seawater, and second one is reducing overconsumption. Means overconsumption should be reduced. And how we conserve the mineral resources. Conservation means there should be judicious use within
with minimum wastage. And one way of minimizing or reducing wastage is recovering as much as possible and leaving nothing as a waste. And they remain barren and do not allow the growth of any vegetation. And such waste or damaged lands can be covered by fresh topsoil. Here you can see the conservation of mineral resources in this picture. And at the end of the session, you have two questions to do yourself. What is recycling of a metal and what purpose does it serve? And in what way can you check the soil sickness? Thanks. That's all for the session. We Learning, Happy Learning.